कश्मीरी कशिर, एहसास कश्मीर का। Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Akansha Parimu. Let's take a look at what made news this week. POGB traders continue protest, demand end to tax collection. Yusmarg in the Union Territory of Jammu and Kashmir witnesses a remarkable increase in tourist footfall. First ever Jammu and Kashmir Film Conclave organized in Srinagar. New policies unveiled to attract filmmakers from across the country. The Indian Army hosts artillery display in Akhnoor district, inspiring school students to serve the nation. And in our special section of Incredible India, we bring you the taste of sumptuous thalis that embody the culture, tradition and hospitality of this great nation. Border trade between Pakistan and China remains at a standstill as traders in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan intensify their sit-in protest. The demonstration, taking place in Sost village in the Upper Hunza region, is driven by a recent ruling from the POGB Chief Court that found various taxes imposed on local residents to be unlawful. The traders who have set up their sit-in at the NLC dry port in Sost are calling for the implementation of this court order which mandates tax exemptions for cross-border trade in the region. A report. Border trade between Pakistan and China remains halted as traders in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan have extended their sit-in protest. Protesters in the Sost village of the Upper Hunza region of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan are advocating for an end to tax collection in line with a recent ruling by the POGB Chief Court that deemed various taxes imposed on residents unlawful. Traders from POGB initiated a sit-in at the NLC dry port in Sost to demand the implementation of a court order regarding tax exemptions for cross-border trade with China through the Khunjarab Pass. This protest has halted trade activities and traders have threatened further action, including blocking the Karakoram highway if their demands are not met. They argue that the authorities' actions are unfairly hindering their trade and employment opportunities. गिलगित बल्तिस्तान में सेल टैक्स और इनकम टैक्स यहाँ लागू ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी देने के हम बॉन्ड हैं और वो हम देने के लिए तैयार हैं। इस पर आज अगर हमारी बात मानी जाती है तो हम आज अपना धरना को बैक करेंगे, कल मानी जाती है तो कल बैक करेंगे। अगर नहीं माना जाए, अगर 2 महीने भी बैठना पड़ा है तो हम इधर हैं और हम अगला लाएमल तय कर रहे हैं कि शायद हमें सीपेक रूट को भी रोकना पड़े। According to local media reports, the protest came in response to a writ petition filed by the POGB Importer and Exporter Association. The court had issued a stay order restraining the customs authorities from collecting sales tax, income tax and additional sales tax from local importers and exporters at the Sost border station until the final decision of the case. However, the traders allege that the customs officers and the Federal Bureau of Revenue are employing tactics to delay the implementation of the court order. As a result of the protest, several foreigners are stuck in Sost due to disruptions in immigration services to China. We are Chinese. We want to go China, but this border is closed. So we don't know tomorrow is which time, which day is will be open, and we just all day we wait here for open.
The taxation issues in regions like Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan are complex and multi-layered. Traders frequently deal with inconsistent enforcement of tax laws, as different areas may interpret and apply tax regulations differently, leading to confusion and conflicts. Frequent changes in tax policies and regulations add to the uncertainty, making it difficult and expensive for traders to adjust to new rules and compliance requirements. Moving on, Yusmarg in Budgam district of the Union Territory of Jammu and Kashmir is experiencing a significant surge in the number of visitors these days. Known for its verdant meadows and tranquil ambience, Yusmarg offers a refreshing retreat from the summer heat. Families and adventure enthusiasts are flocking the destination to engage in several activities offered at Yusmarg. With enhanced security and amenities, local businesses are thriving along with the increased footfall. The government is investing in infrastructure to boost tourism, making Yusmarg a prime example of the region's natural allure. Take a look. Nestled in the Budgam district of the Union Territory of Jammu and Kashmir, Yusmarg is witnessing a remarkable surge in visitors, both locals and tourists. Known for its verdant meadows, dense forests and tranquil ambience, Yusmarg offers a refreshing retreat from the summer heat. The resort's popularity is soaring as people seek solace in its cool and peaceful environment. Families, adventure enthusiasts and nature lovers are flocking to Yusmarg, drawn by its breathtaking scenery and the chance to engage in outdoor activities such as trekking, horse riding and picnics. बहुत आ रहे हैं यहाँ पे और यूसमर्ग बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ आना चाहिए भी लोग। और यहाँ दूध गंगा है, डैम है, बरगा वैली है, लिद्रमड़ है, क्योंकि यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है जैसे कि दिल्ली में है, बेंगलोर में है, श्रीनगर में है। यहाँ पे अच्छा है, ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ यूसमर्ग। Local businesses including hotels, guest houses and eateries are thriving with the increased footfall. Authorities are also making concerted efforts to keep the area clean and safe for visitors, with enhanced security and improved amenities. Scorching temperatures during this year's summer season drove a large number of people towards cooler destinations like Yusmarg. The pleasant climate combined with the stunning landscape makes it an ideal gateway for the tourists. युष्मर्ग का मजा ही कुछ अलग है। यहाँ आएंगे, यहाँ की लोकेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना खुली ग्राउंड है और यहाँ पर आनंद बेहद आपको इंशाल्लाह ऐसा मजा आएगा कि आपने शायद ही कोई जगह देखी होगी। तो कितना क्राउड है यहाँ के लोगों का? क्राउड बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफी जनता आ रही है गर्मी से राहत लेने के लिए। जैसे कि हम अगर कहीं नीचे के इलाके में रहेंगे, श्रीनगर टाइप, तो वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी महसूस करेंगे। यहाँ पर आके ऐसा ही महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी है। As the influx of visitors continues, Yusmarg stands out as a prime example of the Union Territory's natural allure, providing much needed respite from the summer heat, while giving a significant boost to local tourism and the economy. Recognizing the immense potential of tourism in Yusmarg, the government is implementing various initiatives to boost the industry in the region. With a key focus on infrastructure development, the government is investing in improving road connectivity and upgrading public amenities to provide a seamless travel experience to the tourists. In an effort to boost Kashmiri films and attract Bollywood filmmakers to the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Department of Information and Public Relations hosted the Jammu and Kashmir Film Conclave at the Sher-e-Kashmir International Convention Centre in Srinagar. The event featured the unveiling of Jammu and Kashmir Film Policy 2024 and the launch of new initiatives to support filmmakers from across the country. Prominent Bollywood figures attended the conclave that included workshops and panel discussions, marking a significant milestone in the region's cinematic landscape. Take a look.
In order to promote Kashmiri films and invite Bollywood filmmakers to the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Department of Information and Public Relations (DIPR) hosted a vibrant and engaging Jammu and Kashmir Film Conclave at the Sher-e-Kashmir International Convention Centre in Srinagar. The conclave was inaugurated by Manoj Sinha, the Lieutenant Governor of the Union Territory. During the event, Manoj Sinha unveiled the Jammu and Kashmir Film Policy 2024 and launched a slew of initiatives including a single window portal for film shooting permissions and subsidies to facilitate filmmakers from different parts of the country. He also felicitated the winners of the Naya Jammu Kashmir short filmmaking competition and awarded them winning checks for their enthusiastic participation. On the occasion, prominent Bollywood figures including Madhur Bhandarkar, Rahat Kazmi and Mir Sarwar were also present. I think it's absolutely a great initiative. जम्मू कश्मीर का फिल्म कॉन्क्लेव हो रहा है और मुझे बहुत ही एक ग्रेट ऑनर है यहाँ पे मैं आया हूँ. मैं हमेशा कश्मीर से जुड़ा हूँ. हमेशा एज अ टूरिस्ट जो है मैं पिछले 17-18 साल से आ रहा हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं यहाँ पे जूरी में भी हूँ शॉर्ट फिल्म्स के और मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एलजी साहब ने किया है, मनोज जी ने, सिन्हा साहब ने, कि इस तरह का कॉन्क्लेव जहाँ पे अलग अलग तरह के फिल्म मेकर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं और बहुत कमाल के लोग हैं यहाँ पे, बहुत कमाल के टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है और मेरे ख्याल से ये उनके लिए वो मौका है जहाँ पे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे आके शूटिंग करती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. और मेरे ख्याल से जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है बहुत ही कमाल की पॉलिसी है, विच इज़ गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. The day-long event featured a series of panel discussions, filmmaking workshops and exclusive film screenings, marking a significant milestone in the region's cinematic landscape. The conclave's afternoon session commenced with insightful panel discussions focusing on the evolving film ecosystem in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The revival of film shootings will make the industry stronger and local artists of the valley will get a chance to showcase their talent. The authorities garnered much praise from the artists and filmmakers for organizing the conclave and hoped for more such initiatives in the future. ये बहुत बड़ा कदम है आज हमारी सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से यहाँ पर जो फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इतना बड़ा पुश लोकल फिल्म मेकर्स के लिए, प्लस जो बाहर से आने वाले फिल्म मेकर हैं उनके लिए भी है. और जो बाहर से फिल्म मेकर आएंगे उससे एक सपोर्ट सिस्टम जो है यहाँ पर हमारे नए जो यंग टैलेंट है उसको मिलेगा. यहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और उनको एक पुश की ज़रूरत थी और वो आई थिंक उसकी एक अच्छी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि इसी तरह से आगे भी ये होते रहना चाहिए. सबसे पहले तो यही है कि ये स्टेप के लिए जो मैंने बार बार ये बात बोली, इट्स अ लैंडमार्क स्टेप, डोंट डाउट. और जो स्पेशली मैं बार बार यही बात बोलूँगा, स्टेज पे भी मैंने यही बात बोली है कि जहाँ की जो कश्मीरी फिल्में बनानी हैं, फीचर फिल्में बनानी हैं, रीजनल फिल्में बनानी हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है. बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंड्स की, और फंड्स की अगर मैं अपना पैसा लगाता हूँ, हार्ड अर्न मनी लगाता हूँ, मुझे हर बंदा यही कहता है कि रिटर्न्स कहाँ से आएंगे. तो इफ़ आई हैव अ मिनिमम गारंटी एटलीस्ट कि सब्सिडी से, इंसेंटिव से मेरा कुछ पैसा सेव रहेगा, बाकी कहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, दैट आई नो. बट इनिशियली इफ आई हैव ए गारंटी कि यार कुछ बेनिफिट तो मिलने वाला है इस चीज़ से, और ये यहाँ के फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है. Such initiatives should continue to revive the film industry so that new artists and filmmakers get a platform to show their hidden talent. With the launch of the single window system, the aim has been to simplify the process of permissions and subsidies so filmmakers can focus on their creative endeavors. The first ever Jammu and Kashmir Film Conclave underscores the government's commitment to reviving the film industry in the Union Territory and encouraging filmmakers from across the country to shoot their films in the paradise on earth.
To develop patriotism and national security awareness, the Indian Army organized an artillery weapon display in Malpur village of Akhnoor district in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Local students eagerly participated, learning about various weapons and their operations. The event aimed to foster respect for security forces and inspire youth to serve the nation. The Indian Army's efforts in border security and regional development received widespread praise, highlighting their commitment to holistic progress in the Union Territory. Take a look. In the village of Malpur, in the Akhnoor district of the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Indian Army organized a special artillery weapon display. The event saw enthusiastic participation from a large number of students from local schools in the region. The purpose of the event was to develop a sense of patriotism and spread awareness about national security among children and youth. Soldiers provided detailed information about different types of weapons and their functioning, increasing curiosity and excitement among the students. यहाँ पर हमें वेपन और इक्विपमेंट दिखाए गए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि हमने कभी ये हथियार हाथों में रख के चलाए देखे और हमें ये कुछ बहुत अच्छा लगा। इंडियन आर्मी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमें ये बहुत अच्छा लगा। भारतीय सेना हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमें बहुत फैसिलिटी दे रही है और हमें यहाँ पर इन्होंने तोप भी दिखाई। The children watched the weapon display with great enthusiasm and asked numerous questions to the soldiers. They were also given an opportunity to hold the weapons and learn about the operational procedures of the Indian Army. Programs like these not only increase awareness about the national security among students, but also instill a sense of patriotism and respect for the national security forces. मैं आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खास करके इस प्रोग्राम से जो यहां पर बच्चों को लाया गया, डिस्प्ले कराया गया, उनको बताया गया कि जो ये वेपन इंडियन आर्मी जो होल्ड करके चलती है अपने साथ, उसके वर्क दिखाया गया कि वो काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका संचालन किस तरीके से होता है, कौन सा यूनिट जो है वो फॉरवर्ड रहता है, कौन सा यूनिट जो है बैकवर्ड रहता है, जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसीज दिखाई गई, एक इक्विपमेंट के साथ कितने बंदे डिप्लॉय होते हैं वो दिखाया गया। तो ये सब देख के बच्चों में जागरूकता आई है इस चीज को लेके कि हम लोगों को भी नेशन के लिए सर्व करना चाहिए, आर्मी के लिए मेहनत करनी चाहिए। हम भारतीय सेना के शुक्रगुजार हैं कि भारतीय सेना ने हमें आज ये मौका दिया कि हमें और हमारे बच्चों को ये मौका दिया कि वो असल लाइफ में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनको हाथ में ले सके, उनको देख सके, क्योंकि ये सारी चीजें तो काल्पनिक हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब चीजें हमने देखी हैं पर फोन में या टीवी में देखी है, मूवीज वगैरह में देखते हैं। रियल लाइफ में इनको देखना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी जिन्होंने हमारे बच्चों को ये मौका दिया कि हमारे बच्चे जो है सच में इन वेपन्स को हाथ में ले सके, उनको देख सके। ठीक है। और कारगिल वॉर में जो वेपन्स यूज हुए थे, जो जैसे तोप आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसका इस्तेमाल कैसे है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बच्चों को दिखाया, बच्चों को सिखाया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं इस चीज की तरफ, इंडियन आर्मी की तरफ जो उनका रुझान है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो पक्का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट जो उनका इस तरफ बढ़ेगा। The event received widespread praise for the Indian Army's efforts in securing borders and encouraging the youth of the Union Territory to participate in national development. Beyond security, the Indian Army, in collaboration with the government, is committed to ensuring the well-being of every citizen in the Union Territory. Through infrastructure development projects, medical camps and various other initiatives, the Indian Army strives to foster holistic development in every nook and corner of the region. Indians have a deep-seated love for food, viewing it not just as sustenance but as a profound expression of culture and tradition. Nowhere is this more evident than in the iconic thali, a quintessential Indian platter that embodies hospitality, regional diversity and a way of life. Take a look. More than a meal, Indian cuisine is a sensory journey through centuries of tradition and flavors.
The aromatic blend of cumin, coriander and cardamom on an Indian platter tantalizes the senses and reflects the culinary diversity of the nation. The thali or Indian platter is a symphony of flavors and textures, offering everything from fragrant rice and assorted bread to a variety of curries, pickles and sweets. It caters not only the palate but also nourishes the soul, embodying the cultural ethos of Atithi Deva Bhava, treating guests like gods. Sasuma, an authentic Gujarati restaurant in Surat city, offers a delightful Gujarati thali brimming with flavors. This unlimited spread includes aromatic curries, regional favorites like dhokla, khichdi, thepla and a variety of sweets. Each dish on this heritage-rich platter is served in small balls. हमारी गुजराती थाली है, उसमें करीब 24-25 आइटम का हमारा अनलिमिटेड सब पैकेज होता है। यहाँ हम दो टाइप की स्वीट्स देते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में होती है, एक ड्राई फॉर्म में होती है। जो सीजनल जो होता है वो सीजनल से हिसाब से हम उसको दी जाती है, एक ठंडी और एक गर्म। ठंडी में सर कभी आम की सीज़न है तो आम रस होता है, रबड़ी की वैरायटी होती है, मट्ठा की वैरायटी होती है, श्रीखंड की वैरायटी होती है। उसके साथ कौन सा ड्राई स्वीट में कौन सा गरम जो लाइव हलवा बनता है उसमें कौन सा उसके साथ मैच होता है, वो हिसाब से सिलेक्शन होता है। और 3 टाइप के फरसान देते हैं, एक फ्राई फरसान होता है, एक दही का चाट होता है, वो चाट की वैरायटी होती है, और एक ढोकले की वैरायटी होती है। Typically served on a banana leaf, the South Indian thali features a harmonious combination of dishes such as sambar, a tangy lentil soup, soft idlis, fluffy dosas, coconut chutney and crispy papadums. This traditional platter showcases the region's rich culinary heritage and is enjoyed for its balanced textures and robust flavors. Each element, from the fragrant rice to the array of vegetable sides, reflects the cultural essence of South India, making the thali not just a meal but a cultural experience cherished by food enthusiasts worldwide. I like bread. I like parotas with raita. Yes, with raita. Also, I like dosas and puris. Idli is also okay, but it's very plain idli. But dosa is the most optimal. I think the most optimal option. In a Chennai city, Ponnu Sami Restaurants presents the Bahubali Thali, a grand feast emerging North and South Indian cuisines. Featuring 54 varieties including sambar rice and paneer butter masala, this thali epitomizes India's culinary diversity and grandeur. We curated this thali, Bahubali thali. Bahubali is usually associated with the grandeur, right? So this thali runs the gamut of, from soups to main dishes to side dish, everything. You name a dish in the Ponnu Sami menu, you will find it in this, right? So we thought it would be a nice experience to give it to the customer. This is pre-ordered, right? This is not something that we can do off the hook, because it takes quite a while to prepare the entire dish, right? So to put together, it takes about 6 people to finish the dish in about 25 to 30 minutes. Indian cuisine isn't just about food, it's about preserving cultural heritage and celebrating diversity. Each thali tells a story, offering a taste of India's rich traditions and flavors, cherished by locals and admired by foreign visitors. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.